Assalam-o-Alaikum and welcome. Assalamu-Alaikum and welcome back with another video. This is the video about parts of speech. Here we discuss fifth part of speech, that is adverb. So stay with us. Today's topic is adverb. Adverb. Definition of adverb is it adds extra meaning to a verb, an adjective and an adverb. It adds extra meaning to a verb, an adjective and an adverb. Adverb gives us more information about verbs. They tell us how, when, why or where things take place. Some adverbs end in ly. They are mostly derived from adjectives. उर्दू में इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है, ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की वजाहत करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स ज़्यादातर इस बात की वजाहत करते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ, क्यों और कितनी बार हुआ है या होगा। The word adverb means addition of something in a verb. जैसे कि नाम से जाहिर है कि एडिशन करना, एडिशन इन अ वर्ब, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल से हम एडवर्ब को समझ लेते हैं। He runs slowly. इस सेंटेंस में slowly एडवर्ब है। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। He runs slowly. Slowly एडवर्ब है और runs verb है। The word runs is a verb. The adverb slowly tells us how he runs. Second example, it is very small. इसमें very adverb है और small adjective। हमने अब small के मीनिंग में very एडिशन करता है, it is very small. Third example is he runs very slowly. इस सेंटेंस में very एडवर्ब है, slowly भी एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब्स की लिस्ट देख लेते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है सम एडवर्ब्स एंड इन ly, मीन्स के लास्ट में ly होगा, और कुछ होते हैं एडजेक्टिव से बनती, जो फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव केयरलेस है तो हम उसका एडवर्ब केयरलेसली बना देते हैं। सीरियस को सीरियसली, सीरियसली, शाय, परफेक्ट परफेक्टली, स्मूथ स्मूथली, रैपिड रैपिडली, रफ रफली। इस तरह से हम एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट कर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।